everyone and welcome back to my channel। आज का वीडियो थोड़ा डिस्टिंक्ट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ DIY क्लीनिंग रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ। मैंने मेक श्योर किया है ईच एंड एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट दैट आई यूज इन दीज रेसिपीज आर यूजुअली अवेलेबल इन द किचन। सो आपको किसी भी चीज के लिए कहीं भी दौड़कर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको आपके किचन में मिल जाएगा। आपको बस इन सारी चीजों को असेंबल करना है एंड ट्रस्ट मी यू विल बी थैंकिंग मी फॉर द क्लीनर्स दैट आर गोना बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दीज रेसिपीज। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Let's just straight away jump into the video. Also, if you people liked the video, please do consider subscribing and also to give me a huge, big, fat thumbs up. Let's just get started. So, first of all, let me break down the ingredients for you all so as to make sure you people don't get afraid of. पहली चीज जिसकी आपको जरूरत है वो है पानी। बहुत कॉमन है, it's water. दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत है वो है एक डिश वॉशिंग लिक्विड। आप कोई भी लिक्विड यूज करते हो, विम, प्रिल, एनीथिंग एट ऑल। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट अ डिश वॉशिंग लिक्विड इज इट इज नीदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन इन नेचर। इट्स pH स्केल इज बैलेंस्ड। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है vinegar. The white vinegar which is available in everyone's kitchen is really good as a cleaner. चौथी चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो है बेकिंग सोडा। यस गाइस, बेकिंग सोडा की स्मेल इरेजिंग प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज आर समथिंग जिनके साथ आप कंपीट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसकी आपको जरूरत है वो है रबिंग अल्कोहल। ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और इसकी प्राइस 180 रुपीज है। मैं आपको Amazon का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऑल्सो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ये बता रही हूँ ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मिल जाएंगे, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। इसके अलावा आपको जो लास्ट चीज है जो चाहिए होगी वो है ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी ड्रॉप्स उसकी। दैट्स इट। These are the ingredients that you do need for creating certain DIY cleaners which are really very effective. They have completely changed my life. I wouldn't say उन्होंने मेरे बाकी सारे cleaners को completely replace कर दिया है, मगर still they have made my life a lot easier and it's a 50-50 ratio of me using other cleaners as well as the DIY cleaners that I do use. So for the very first recipe you have to take 50% of water and 50% of vinegar. Combining these two, you will have your glass cleaner. Any type of glasses, windows, table, TV, paintings, any type of glasses are being capable of cleaned by your vinegar and water solution. For the second recipe, you have to take 2 cups of water and you have to combine it with 2 tablespoons of dishwashing liquid, and this will give you your all-purpose cleaner. You can use it on any flat surface of yours and it will get grease free at an instant. For the third recipe, you have to take 2 cups of vinegar and add 2 tablespoons of dishwashing liquid, and this would create a degreaser for you all. So you can go ahead and use it on your tiles. Now usually Indian kitchens और bathrooms में tiles को साफ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बेहतरीन degreaser की तरह काम करेगा आपके लिए। बहुत awesome है। इसे बस आपको अप्लाई करना है, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद में आप ऐसे कपड़े से अपने टाइल्स को रब कर दीजिए एंड ट्रस्ट मी, all the oil, all the grease that is accumulated on the tiles immediately would come off. For the fourth recipe, go ahead and combine 50% of rubbing alcohol with 50% of water and you will have a disinfectant for yourself. You can use it on wash basins, you can use it on sink, you can use it on any surface that you want to, or if you feel that it has been infected because of your hands or anything like that, it would act as a very good disinfectant. So do go ahead and try it out. For the fifth recipe, go ahead and combine 2 tablespoons of baking soda with 2 tablespoons of vinegar. Take it on a toothbrush and apply it in between the lines of the tiles that are there. आपने usually notice किया होगा tiles के बीच की जो lines होती है वो black हो जाती हैं। आप बेकिंग सोडा और विनेगर का ये मिक्सचर बनाकर टूथब्रश की हेल्प से उन लाइंस को क्लीन कीजिए।
Trust me on this thing, there would be no gunk in between the lines. Coming up to the very last recipe, take 50% of water and add in 2 to 3 drops of olive oil to it and use it to clean all your furniture. All your furniture will regain its natural shine back again, because olive oil will help it to regain the natural oils or the natural shine. So with that, I finish all the DIY recipes. The only thing that you need to keep in mind while preparing these DIY recipes is the expiry date is relatively really low. So सिर्फ आधी बॉटल कॉम्बिनेशन ही आप तैयार कीजिए, क्योंकि इसे आप 1 महीने से ऊपर स्टोर नहीं कर सकते. तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इन क्लीनर्स को घर पर क्रिएट करें, इन्हें यूज करके देखें. इनमें से कोई भी एक रेसिपी आप डेफिनेटली ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई हो तो. So with that being said, I'll take your all leave. I'll close off this video and wait for your comments in the comment section below. If you people found any of these recipes useful, do let me know in the comment section below. So with that being said, I'll take your all leave and I'll see you guys in my next video. Till then, just stay blessed, take care of yourself, and don't forget watching my videos. Bye.